Hello guys, once again welcome back to you all. Myself Ambuj. Today we are going to discuss one of the most important topic for class 9, which is motion physics part 1. In this video we will discuss just only theories and the numericals we will discuss in part 2. So let's begin this video. Before that we need to know a very simple definition of motion, how we can define motion in very simple terms. So let's see how we can define motion. Even please comment me too how the video quality is coming. And even let's see how we can define motion. Motion is nothing but it is a movement. It is a movement with respect to time. Respect to time. Hence we have defined here the motion. तो मोशन को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया कि एक्चुअली क्या है, मूवमेंट है जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में होता है. ठीक है, यानी जहां पर भी मोशन होगा कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल्स के इंटरवल में ही होगा. ऐसा नहीं है कि विदाउट टाइम इंटरवल में मोशन देखने को मिलेगा. ठीक है, अब यहां पर हमें जानने को एक और नया टर्म मिलता है, फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी तो हम लोग पहले से ही जानते हैं. वी ऑलरेडी न्यू दैट देयर आर we already knew that physical quantities are those quantity that can be measured, and there are so many physical quantities because we can measure so many quantities. On the basis of this, physical quantities are further classified into two. One is vector quantity VQ and another one is scalar quantity. A quantity which have only magnitude is known as scalar quantity, where a quantity having magnitude even with direction is known as vector quantity. So let's see example. Distance. Example of distance. No need of writing this, you already knew this one. And this one displacement, because we already have studied these terms in our basic classes. Now let's see why we are discussing these all terms, because we will use these all terms in this video only. So let's see. After this we are going to study about detail about motion. Hence motion is further classified into two types, uniform motion and non-uniform motion. So let's see uniform motion or in uniform motion. So let's see. तो हम लोग देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं. Actually uniform by its name only is that uniform means equal. Whenever an object travels an equal intervals of time and equal distance, then the object is said to be in uniform motion. Means equal distance in equal time, no matter how short time interval may be, but the only matter is that the distance travel need to be an equal intervals of time. Let's define the uniform motion. Suppose one path, this one is straight path. Here an object started moving from speed. We use this distance time graph, distance time. Hence the slope will give us the motion. We are discussing uniform motion, then the slope will be a straight line, but in case of non-uniform the slope will be curve. Hence from here, is it clear to you all? And now we are going to discuss about non-uniform, how we can differentiate between uniform and non-uniform motion. Just here we have to add non-uniform motion. Same here, uniform means equal, then non-uniform means not equal. Hence we are just going to discuss about non-uniform motion. In case of non-uniform motion, the object will not travel equal interval. The object will not travel equal distance in equal interval of time. Suppose that there might be equal interval of time. Suppose here only A to B, the straight path, the object is same 1 second, 2 second, 3 second, 4 second. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला ये क्या करेगा 10 मीटर, फिर करेगा 20 मीटर, फिर मैं चलिए मान के चलिए 5 मीटर करेगा, फिर ये चलेगा 15 मीटर. तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन जो उसका जो डिस्टेंस डिफरेंट हो रहा है. हाउ इज द वीडियो क्वालिटी? प्लीज कमेंट में. द व्यूअर्स, आई एम टेलिंग वंस मोर यू. तो यहां पर से देखेंगे कि हम लोग का ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. अब देखिए मैंने पहले बताया, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन द ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट, द स्लोप इज कर्व. हियर द डिस्टेंस टाइम एज आई टोल्ड यू अर्लियर. तो ऐसे ही हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये जो हमारा हो गया ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया. अब फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट distance. What do you mean by distance and how we can classify distance
as a scalar or vector quantity. So let's see what do you mean by distance. Distance we all are studying from our basic classes. तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं डिस्टेंस, तो ये कुछ नया बात नहीं है। तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। मैथमेटिक्स में हम लोग बहुत पहले से सोल्व करते हैं कि डिस्टेंस इज नथिंग बट एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। Hence no need of writing definition, just we have to understand over here actual length without direction यानी यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन मैटर नहीं करता, बस उसका एक्चुअल लेंथ जो भी कवर किया गया ऑब्जेक्ट को, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस मैंने बताया एक्चुअल लेंथ। सपोज दैट मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड ही रीच्ड पॉइंट बी एंड देन पॉइंट सी। दिस पाथ इज ऑफ 100 मीटर एंड दिस वन इज ऑफ 50 मीटर। He covered is 150 meter. Here we don't mention the direction. Hence, as I already told you, whenever the quantity without direction, the quantity will be which quantity? The quantity will be scalar quantity. Hence, यहाँ पर से भाई हमें पता क्या चल गया कि ये जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है। मेन डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, वो क्या होता है। अब हम लोगों ने देखा कि ये एक्चुअल लेंथ होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, ये एक्चुअल ना हो कि ये शॉर्टेस्ट लेंथ होता है। क्या होता है? शॉर्टेस्ट लेंथ। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या मैटर करता है? डायरेक्शन। हेंस एक ऐसा क्वांटिटी, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी और ये हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी। अब सपोज यहां से एक मान के चले एक ऑब्जेक्ट ऐसे एक पाथ पे मूव करता है, ये है हमारा 10 मीटर, ये है 20 मीटर और ये बी पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो यहां पर से जो शॉर्टेस्ट हो गया ए के बीच का ये जो डिस्टेंस, यही जो हमारा एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ डिस्टेंस इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। हेंस यहां पर से हम लोग डेफिनेशन क्या निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज ए टाइप ऑफ डिस्टेंस ओनली बट इन ए सर्टिफाइड डायरेक्शन एंड द शॉर्टेस्ट लेंथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर से हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को भी डिफाइन कर लिया। अब चलिए चलते हैं इसका एक नया टर्म जो हमें पढ़ना है कि क्या कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है कि नहीं। देखिए एक्चुअली डिस्टेंस then the distance and displacement will be same। तो यहां पर से क्लियर भाई लोग कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कब सेम हो सकता है। अब चलिए हम लोग देखेंगे, अगले पार्ट में मिलेंगे आपके साथ। वाचिंग टू यू ऑल। सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे पीडीएफ सभी को डिटेल से। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।